medium and the longer term have to be addressed harmoniously. I think that's what Mr. Tareen said, that it is the intention to go forward that way. So returning to my subject, so foreign currency debt. Foreign We must hit the ground running और उसके बीच में हम वो प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। हम पहले ये जो हम खड्डे में जा चुके हैं, हमने खड्डे से कैसे निकलना है और फिर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लेके हमने करनी है जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपने पांव पे खड़ी हों और किसी से उनको मांगने की जरूरत ना हो। बहुत शुक्रिया। He don't need also any introduction. Mr. Salida sir, thank you. तर्जुमा मैं उर्दू में कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, तो बेहतर है कि मैं अंग्रेजी में कहूँ so that I know exactly what it is that I'm referring to. Prices. They'll take a look, and if they think restructuring is right, due, they will set up a creditor committee within 6 weeks to take matters further. It's not moving very fast, this program, but I just want to point out that the advanced world has accepted that there is going to be a measure of strain, and it's better that the debt problem be handled preemptively rather than wait for defaults like in the 1980s or like in the Asian crisis, which then feed on themselves and make matters much worse. So those are my comments on foreign debt. On domestic debt, which is also a big strain and is squeezing resources out of our economy. Let me start with the banking sector, because that will take us on to government debt and show the is having on the rest of the economy, the crowding out effect on the rest of the economy. Our banking sector is small, and there are lots of reasons for that. I won't bore you with them, but because the banking sector is small, we have one of the lowest private sector credit to GDP ratios, around 17-18% is what it is and what's it been. I mean, that's not adequate for 220 million people. That's not adequate for an economy that would aim to grow 7% or 6%, 7% like our neighbors are. So, one reason why our advances are low is because the banking sector is small. The other is because the giant appetite. This is what's happened to advances to deposits of banks. How they're going to diversify debt, for how they're going to lower the long-term cost of debt, and we need very badly to create a yield curve. Now, I don't want to go into detail, but a yield curve simply means the government borrowing at 3, 5, 7-year maturities in such quantities that trading in those government securities, because the government is borrowing so much in those categories, instead of borrowing 30 and 90-day treasury bills,
because it's borrowing so much, people will invest in that paper, trade in that paper. What you'll get is a liquid market, and that that the rate that 3-year paper trades at then is fixed. You have a benchmark, or you have a similarly for 5 years, similarly for 7 years, and therefore what the private sector can then do is issue fixed rate bonds, which in this market is absent. Our private sector shouldn't be, our big companies shouldn't be borrowing from banks. It's cheaper to borrow from the bond markets. In America, the bond market is about 4 times the size of corporate debt of banks. But our bond market is barely developed, and one of the biggest reasons for that is the absence of this yield curve. Anyway, those are the responsibilities of the debt manager. We expand mutual funds, add non-banks and stock exchange custody and clearing institutions, add them to your primary distributor list. So your primary distributors are not just 6 big banks, but a lot of market players. So you widen your distribution pool, introduce a digital web for retail investors. You know, banks give you whatever they pay you on your savings account, they earn 1.5–2% more on treasury bills. So why can't a small savings investor buy the treasury bill himself? And if you have a digital web portal, then anyone with 10,000, 20,000, 30,000 rupees can go and buy a treasury bill or buy a bit of a treasury bill. Treasury bills should also be fragmented once retail investors come in a big way. Greater access of foreign investors, not today, today we may not be attractive, but it can all change in a year and a half. Use global clearing systems, increase trading on the stock exchange itself, identify new assets for sukuk issues. The reason our sukuk issue is muted is because the governments had problems identifying assets. They exist. They usually need some clearing up on title, etc., which should be done, and then we should consider asset-light sukuks. For example, commodity financing. Asset-light means it's not a building, it's not a railway track, but it's a crop, which will disappear in 6 months' time. However, the crop produces cash flow. So you can do a lot of short-term financing for sukuks if you can get the right framework to issue asset-light sukuks. Tax is, I won't talk about it, let's take it for granted, we need to make these tax efficient. Reduce high level of central bank SMOs, OMOs and OMO, open market operations. These are injections that I'm referring to that the State Bank carries out. The State Bank buys treasury bills from banks, gives them fresh money, gives them money, with which, now the old treasury bill is a repo. So the bill they bought hasn't been sold to them, it's been repoed. So it's still owned by the bank. Now with the money you've given the bank, you sell them a fresh government treasury bill. That money government's account into the ministry. This is government by the State Bank indirectly as opposed to directly, primarily. But it's gone up a trillion. It's 25% of our deposits. 60% of our loans, it's far too much. So the first success with more treasury bills should be to run this SMO figure down from 5.2 really under 1 over a long period of time, 1–2 trillion in the short term. Only taken, again in the interest of time, I've only taken one strategy for one of the most important reasons people hold, there's an informal market where, that is not unrecorded market where cash is obviously the way to trade, not through bank accounts, that gets you into the recorded market. But they're also important, the other important reason people hold cash is the transactional need. 96% of our transactions, our retail transactions are still cash. And this is, it's very significantly higher than anywhere else. So if we can get
We've got about 3.5 million vendors of all types, from supermarkets to small karyana stores. If we can persuade all of them to work on a QR code basis, then the buyer doesn't need to hold cash. Then if he gets his salary, he puts it into a bank account, he doesn't keep it at home. I'm talking about people earning 60, 70, 40,000 rupees a month. And all that cash then transfers to the banking system. Collectively, that would be a huge amount. Exemption of duties on digitization of fees, digitization of government revenue and government receipts and payment. This is already, the system has been prepared. I don't know the reason for the delay. It was sitting with the AGPR, the Accountant General Pakistan Revenues, but the system is ready to work between the State Bank and the government. The technology has been established and all the banks. It's just up to the government to give its green light. Now this will deal with a lot, this will eliminate a lot of the cash if the government receives and pays digitally, because a lot of government payments are still in cash. CDNS, digitized CDNS, this is the National Savings Schemes. So foreign debt, domestic debt, getting the banks, enabling the banks to lend more through reducing the role of government and banks' balance sheet. This is the last slide I had. Development finance, as you saw, lending to the SMEs is only 6% of private sector lending by banks, and agriculture is the same, it's about 6%. Now, these sectors are the biggest employers in the country. They have the most potential to grow, and they are really, by and large, on the fringes of formal finance. So we need to get institutions that focus on them. If you look at the largest countries in Asia, the largest economies, you look at Japan, you look at South Korea, China, India, in their development stage, they built the middle of the economy through public sector development banks. Now they don't have to be public sector, but in their case they were public sector, who devoted to these things that I've put SMEs agriculture. And by the way, it's not just money, it's also advisory services. It's also helping them build supply chains. It's also to agriculture supplying machinery, leasing tractors to them, or supplying them with cold chains and supplying them with warehousing. That's what these development banks do. Now, how can we suddenly create a big development banking sector? We have let the development banks we have die. There was Big IDBP, there was Bankers Equity, NDFC, RDFC, Housing Bank. They've all sort of fallen by the wayside. So how do we today get a full-blown development banking sector? Do we force our banks to do it? Do we go India's way and impose directed lending rules so that 40% of bank lending is in these sectors? Not the ideal way to go about it. So I'm not sure how we do this. Just some thoughts. We can convert our provincial banks. So that's Khyber Bank, Sindh Bank, Bank of Punjab, into provincial development banks. And they stop all other business and they deal with these subjects in provinces. One possibility, and there's one apex bank on top of them that's keeping sight. That's one possibility. I'm not saying it's the right one, but I just suggest it's one. We've got 6 development finance institutions, a lot of money, but not really lending, much of that cash sitting in treasury bills and PIBs. Convert the 6 into a single institution. With the support, each has a joint venture partner. There's a country in each, one of them that Pakistan has partnered with. So with their support, and you can allow each development bank to choose the sector it wishes to engage in. For someone it could be infrastructure, for someone it could be agriculture, for someone SME. So they have that option. But that's one possibility. Or you just impose development financing on the big state-owned banks. So again, National Bank, Bank of Punjab become pure development banks and nothing else. The important
you see, we can't blame our private sector banks too much. Everywhere in the world, the private sector banks lend short term. They provide working capital to SMEs, not capital for expansion, not capital for machinery, not capital for infrastructure. They don't do that. Now, what's happened elsewhere, these strong development banks from the public sector have made these SMEs so creditworthy that they've crowded in the commercial banks, the private sector. And that's what can happen here. If you're complaining about commercial banks, if you had a strong development banking function going, you would find commercial banks really charging into this field. Anyway, I'll leave it there. I'm sorry I probably overshot. Mr. Tareen has looked at his watch 3 times, and I know if he does it once again, there'll be violence. So, with your permission, thank you very much. Thank you very much, Salim Raza Sahab. In the interest of time, we are already behind 15 minutes, so I'm going to quickly invite Mr. Asif Qureshi. He is the co-founder and CEO of Optimus Capital. So, and he has a 26 years of experience. He is a financial market guru, and he'll be talking on energy. Asif Qureshi Sahab. Thank you. You have to again. Sorry. Yes, assalamu alaikum everyone. Since I have just about 10 minutes to complete this presentation, I'll try to be as quick as possible. This is one slide which sort of summarizes the crushing weight that the economy is facing because of the energy sector. $26 billion of energy import in 2022, which comprises about 49% of the total primary energy supply of the country. 1 trillion and 70 billion rupees paid out to the power sector as fiscal support. Cumulatively about 4.8 trillion rupees paid in since 2007 when the problem of circular debt in the power sector first emerged. 2.3 trillion outstanding power sector circular debt, about 720 billion rupees of gas sector circular debt, 25 billion units of electricity which are lost in T&D, about 300 MMCFD of natural gas which is wasted as UFG. So this is sort of the scorecard or the medical record of the health of the energy sector and the challenges it poses to the broader economy. We are facing an increasing reliance of energy imports. As you can see from the chart, it used to be about less than 30% 15 years ago. It's gone up to about 50% already, and this trend is increasing. Last year, total energy imports were $26 billion, comprising $18.3 billion of oil import, $5 billion energy, LNG, and $2.7 billion worth of coal imports. So these numbers are clearly not sustainable. And one of the reasons why you're facing rising energy imports is because the local production of oil and gas has been declining. Since peaking 10 years ago in 2012 at about 4.4 billion cubic feet per day, gas production is down to about 3,400 billion cubic feet per day. Oil production peaked a couple of years ago. It's down significantly from the peak levels, about 95,000 barrels per day. And these are not encouraging trends for the energy sector in general and for the broad economy in particular. Power sector is by far the biggest drain on the economy. Like I said before, we've invested about 4.8 trillion rupees cumulatively in shape of budgetary support. In the power sector, we still have an outstanding stock of circular debt of about 2.3 trillion rupees as of June 2022. And if you include the cost of budgetary support, obviously the government had to borrow to inject that money into the power sector. At 8%, that comes out about another 2.3 trillion rupees. So cumulatively till June 2022, this sector has already cost 9.5 trillion rupees, and the recent numbers, if you take those into account, it would be in excess of 10 trillion rupees. So just imagine the kind of drag that this sector has had on the broader economy if the same resource had been spent elsewhere, for healthcare, education, infrastructure, economy would have been in a much better situation. Disco's inefficiencies cost about 800 billion rupees last year. The left graph actually shows excess T&D losses in excess of 10%. I've used a 10% benchmark because the efficient discos are generally below that 10% mark.
and you can identify the more prominent discos and how they compare with the other ones. So 10.6 billion units of excess T&D losses that we faced last year. If you multiply that by the average cost of generation for last year, that works out to about 170 billion rupees. Another 230 billion rupees lost in shape of under collection of billing. So whatever amounts that you're billing, you're not getting 100% payments from the customers. So collectively, 400 billion rupees lost there. Obviously, everybody's been complaining about the rising cost of power generation. And if you look at the trend in the initial years, over the last 10 years or so, we faced the problem of rising capacity payments. But in 2022, the trend actually changed because of the shooting up of international energy prices. The energy component of tariff has gone up dramatically. So certain things which you can control, but the other factors which are beyond the control of any government. And it's not just a situation which is unique to Pakistan. All the developing countries, even the developed countries, are facing a similar situation of rising cost of power generation. When we have this absurdly cheap gas in Pakistan, and which is actually encouraging its wasteful or rewarding wasteful consumption across all sectors of the economy. The biggest waste has actually been the residential sector, and that is actually reflected in the graph on the right hand side. If you work out the average cooking load of the economy, the amount of gas that you require, so per household that would be about 35 cubic feet. So you multiply by that by about 11.5 million subscribers, that works out about 450 million cubic feet per day. But the domestic sector is actually getting, during the summer months, about 650 million cubic feet per day. There's a lot of households which are leaving their gas geysers running because the gas is so cheap. So we have to, so there's about 200 MCFD, billion cubic feet of gas that we are supplying on top of the basic requirement of cooking for every household. That's a huge number in terms of the economic waste that we are facing there. Then we have these, varied tariffs across different sectors. We have general industry tariff in the south of about $4.7 per million BTU. Export industry in the south is getting 3.7. Export industry in Punjab is getting $9. Imported RLNG, its cost in its tariff in the last month was about $13.4. So you have to benchmark the cost, the tariffs that we have for different categories versus its substitute, which is the imported LNG. So you can see by the difference between the bars as they compare with the RLNG bar, how much subsidy is being provided to these sectors. And these are not sustainable numbers. Energy infrastructure requires huge investment for modernizing it. Most oil refineries in Pakistan, although their nameplate capacity is in excess of 20 billion tons, they produce about 12 million tons or so. They're based on old technology, which is hydroskimming, which results in production of large amounts of low distillates, for example, furnace oil. In case of Pakistan, it's about 20-odd%. So we end up with a surplus furnace oil because it's being substituted in the power sector by cheaper sources of power generation. Then we have 70% of oil transportation taking place by road, which is not just a safety risk, but a lot of fuel is actually consumed in transporting fuel. So that's a waste as well. And in case of Karachi, we even we supply water to households using oil tankers as well, water tankers as well. So a lot of diesel is actually consumed in supplying water to households as well. Port infrastructure for oil import requires upgradation. Oil piers are not really in the best of health. We can't bring in large oil carriers because we don't have, our ports are not equipped to handle them, and those carriers will have much lower transportation costs. We don't have land-based LNG terminals, which we need, land-based storage for LNG, and that is the reason why we face these problems of certain shortages and surpluses in certain months of the year when it comes to LNG. We don't have, although we've been talking about it for the last 30, 40 years, no strategic petroleum reserves, which the country desperately needs. So those were the sort of a summary of the problems. We just proposed a 5-pronged strategy for restoring the viability or sustainability of the energy sector.
restructuring, rationalization, indigenization, privatization, and electrification. So I'll take them on one by one very quickly. Restructuring of legal, regulatory, and governance. In fact, the entire institutional framework of the energy sector, which has not worked for the last 30 years, needs to be overhauled entirely. We have two divisions, petroleum division, power division within the Ministry of Energy, but virtually they're operating as two independent competing ministries. You know, Power Ministry is complaining to the Petroleum Division that you're not supplying it enough quantities of LNG. Petroleum Division is complaining to the power sector, you're not lifting furnace oil, so the refineries are shutting down. So they're always fighting, writing letters to each other, and not working in coordination as a single ministry. So they need to be merged together, assimilated, integrated with one minister, one secretary of petroleum. Unification of regulators likewise is needed. Right now, I don't think that these regulators talk to each other, very frequently or at all. We need to appoint regulatory board members. Right now, we have provincial representatives. We need to replace them with functional roles, people who are qualified in the respective areas in technical, finance and other related fields relating to energy to be appointed on those board members as board members, market-based compensation for all staff, capacity building across the board along the entire institutional chain, overarching national energy policy rather than having these bits and pieces of different policies for each individual segment of the energy chain, which don't hang together as one policy. We need one national energy policy, which should be overarching, and then we have these subcomponents. We need to have a roadmap for deregulation as well. National rationalization of energy prices, I've labored that point before. We require a major immediate increase in natural gas prices if the sector has to remain solvent. There are massive amounts of receivables which are building up in the gas sector, which are affecting your exploration activities as well. Unified framework of pricing so that all energy substitutes are actually priced based on their heating value while accounting for the pollution effect of different fuels by levying certain carbon taxes on those fuels. Then we need to remove cross subsidies. One category of consumer is subsidizing the other category. That needs to be removed. The government must have direct or targeted subsidies in place. We require comparative industrial tariffs so that a lot of the load which has shifted or which could potentially come back to the grid must be brought back. So a lot of this captive generation, if the industries are offered reliable and competitive electricity supply, this load will come back to the grid. Then we need to reduce the capacity purchase price, the CPP curve of the power sector by flattening out the biggest component of capacity payments, which is the debt servicing component. So we need to extend the debt tenors of these power debts. About 45% of total capacity payment actually is actually from the public sector, especially these large nuclear power plants and hydropower plants. So the charity begins at home. So the government must start by reprofiling its own public sector debts before it moves down to the private IPPs. The indigenization of energy, I don't think that this point could be overemphasized. In the oil and gas sector, there are a lot of, in fact, there's one representative of Sui South here. I was talking to the MD. What they have done very wisely is that they've reached out to some of the E&P companies who have plugged some gas production because the field economics was not making sense, because as the field ages, you have more impurities in the field. The gas quality is no longer pipeline quality, and they need to invest a lot more just to ensure that energy can be supplied or put into the power system. So we need to enable production from existing non-producing gas fields by offering them lucrative prices or bilaterally negotiated rates. We need to encourage upstream activities, address the key issues, which is security, simplifying the approval process. There are a lot of red tape in getting the approvals from the government, and we need to offer better valid pricing, not just for conventional gas, but also for tight gas. Likewise, we need to expand the new frontier we formed in shape of thermal coal for substitution of imported coal by blending it in existing power plants and existing cement plants, carry out feasibility of using that coal for gasification purposes. Then we have massive, you're already aware of this, hydroelectric potential, wind potential, and solar energy potential.
So this is the next, obviously, prioritization in my view is a must. 50% और चिली 54%, इसी तरह वेजिटेबल है। सो जो 2 सालों में 26 अरब रुपए की इनकम बढ़ी थी किसान की, हम समझते हैं कि इस साल में कोई 1000 अरब रुपए की इनकम दोबारा कम हो जाएगी। नेक्स्ट अब चैलेंज इसमें यह है कि हमें जो फार्मर है, नॉर्मली अनपढ़ लोग हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को हर वक्त सपोर्ट की जरूरत है। इनके साथ कम्युनिकेशन में रहना, इनको आप पहले कॉर्पोरेशन कम करना, मोटिवेट करना और कंसिस्टेंट गाइडेंस की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए चैलेंज ये होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ जो मेन एक्चुअल चैलेंज अगर देखें तो हम 2100 कैलोरीज खा रहे हैं पर कैपिटा पर डे, और वर्ल्ड एवरेज जो है वो 2900 है। सेकेंडली ये कि हमारी को 4.8 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ती है। सो दोनों चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो अगले 7 साल में अगर देखें तो हमें 70%, और तीसरी बात इम्पोर्ट सेल्फ रिलायंस के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमें 70% अगर प्रोडक्शन बढ़ाएं 7 ईयर में तो फिर बात बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कंफर्टेबली हम 5 to 6% GDP ग्रोथ कर सकते हैं ज़राअत में, और इसका तरीकेकार ये होगा कि लो कास्ट प्रोडक्शन, मोटिवेशन और परमानेंट गाइडेंस। दूसरा ये कि लो वैल्यू क्रॉप से, जो हमारे पास लेबर्स काफ़ी है, लो वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जाएं। और तीसरा ये कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट हमें क्रॉप्स में और एनिमल में करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो इंपोर्ट हम बहुत महंगी कर रहे हैं, और आगे इस तरह हमारे पास डॉलर नहीं है, हम अपने आप को स्टारवेशन से नहीं बचा सकते जब तक उसमें हम आप कहने कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाते। फार्मर मंडी का कंसेप्ट बड़ा शानदार, जो का प्लान था इसका, से वेदर लंबा है, ऑलमोस्ट 8 महीने का है। 8 महीने का जो हॉट वेदर है, ये नंबर ऑफ क्रॉप्स हमारे यहाँ ज्यादा कर सकता है, और जिन क्रॉप्स को ठंड ज्यादा चाहिए वो क्रॉप्स हमारे यहाँ पैदावार थोड़ी देती है। गंदम है या आलू है, ये पैदावार थोड़ी देते हैं, स्पेशली गंदम एक हमारा वीक और एप्पल फूड ये है। सो हमें डाइटरी रिक्वायरमेंट जब हम चीज में कैलोरी है, प्रोटीन कितने और फैट कितने हैं, तो नेक्स्ट आपका पोटेंशियल है। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि जो कंटिन्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। द कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टर को कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए होती है, इन्वेस्टर को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, और इन्वेस्टर को एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, नॉट ओनली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो विद ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जिसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं, जिसमें रेगुलेटर्स भी हैं, जिसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हर इंडस्ट्री के डिफरेंट रेगुलेटर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो मैं आपको एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं, वी आर नाउ इन नवंबर 2022 और फरवरी 2022 में, आज से कोई 8-10 महीने पहले, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है OICCI, which is the most credible chamber in Pakistan and the oldest chamber in Pakistan, and there are 207 multinationals from 35 different sectors are the members of this chamber. ये हर 2 साल में एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सर्वे रिलीज करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सर्वे इन पाकिस्तान, बिकॉज ये मल्टीनेशनल्स होती हैं, उनके नंबर्स बड़े क्लियर होते हैं, और जो उसमें इंडिकेटर्स नजर आते हैं उसकी बेस पे वो सर्वे आता है, उन रिकमेंडेशंस देते हैं। तो फरवरी में मुझे याद है शौकत साहब मौजूद थे उस मीटिंग में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमने एक मीटिंग की जिसमें OICCI की सारी मैनेजिंग कमेटी आई, और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो अखबारात में पब्लिश हुई, आप सबने उसको पढ़ा, उसको देखा। और जो लास्ट 2 इयर्स का, मैं सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के सर्वे की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप उस सर्वे को देखें तो उसमें जो मेजॉरिटी इंडिकेटर्स थे वो सब पॉजिटिव थे। वो OICC के वेबसाइट पे गूगल आप करें, वो जो रिपोर्ट है वो मौजूद है, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई तो जो उनकी रिकमेंडेशंस थी
उस पर उनकी इंस्ट्रक्शन मुताबिक सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, FBR ने, SCCB ने, BOI ने और जो कंसर्न इदारे थे उन सब ने अपना काम शुरू किया। तो आज की अगर हम बात करें, इन लास्ट फ्यू months, especially in last few weeks, I had discussion with several investors from outside Pakistan, जिनके साथ हम मीटिंग्स करते थे ऑफिशियल लेवल पे। बहुत सारे मैं ग्लोबल CEOs को मैं मिला भी और उससे गुफ्तगू हुई इन लास्ट 1 month, जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रही हैं। They all are actually worried, and worry is not related to with the foreign investor also, but जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, बिकॉज के, और मेरा ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ये मैं जो व्यूज शेयर कर रहा हूँ ये एज अ प्रोफेशनल शेयर कर रहा हूँ, कि जो एक सिस्टम चल पड़ा था, जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हम जा रहे थे, उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, इट्स अ complete process, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। I joined last year as the chairman board of investment. I worked only for 6 months, and मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात बता रहा हूँ। शौकत साहब को भी सारी चीजें पता है, मैं इनके साथ बहुत क्लोजली काम करता था, मेरे उस्ताद भी हैं। बहुत सारी कंट्रीज से और बहुत सारे इन्वेस्टर्स से हमारी चीजें बहुत पॉजिटिव पेस पे चल रही थी और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। मुझे याद है खालिद मंसूर साहब भी होते थे जो CPEC को हेड करते थे, हम लोग बात करते थे कि यार शायद नेक्स्ट 5-6 months में हम ये इतने $1 billion की इन्वेस्टमेंट्स को मटेरियलाइज करेंगे और फिर ये प्रोसेस होगा जो चल पड़ेगा। सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ अगर मैं बात करूं, वी हैड 18 मीटिंग्स ड्यूरिंग माय 6 months BOI टेन्योर, और जिसमें लास्ट मीटिंग मेरी उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खालिद अल फली से हुई थी ताशकंद में। दिस वाज ओवर 2 hours मीटिंग, उनकी तरफ से 3 लोग थे, हमारी तरफ से 2 लोग थे, एंड हमने उसमें पूरी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई थी। 8 सेक्टर्स से, वो सारे सेक्टर्स भी शौकत साहब को पता है, और उन सेक्टर्स में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको दे रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे थे। कुछ G2G थे, कुछ G2B थे, कुछ B2B थे, और जो हमें पोटेंशियल नजर आता है उस पर मेरा एक आर्टिकल भी आया है। अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर में 24 अक्टूबर अभी जो गुजरी है उस पर आर्टिकल देखें, मैंने पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और उसमें सऊदीया की केस स्टडी दी है पूरी, और ये सारी एजम्पशंस बेस्ड नहीं है, सारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ऑथेंटिक नंबर्स हैं, सारा कुछ है। तो ये एक पोटेंशियल हमारा था, हम इन तमाम चीजों को मटेरियलाइज कर रहे थे। एंड आई हैड अ मीटिंग विद द इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया 2 weeks बैक इन रियाद, एंड आई हैड अ मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया आल्सो। सो सऊदी के जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सेल्समैन कहता है अपने आप को। ही इज अ वेरी थॉरो जेंटलमैन, ही वाज चेयरमैन अरामको अर्लियर, एंड बहुत सारी जो उसकी गुफ्तगू थी वो यही थी, जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज और कंटिन्यूशन ऑफ जो पूरा एक सिस्टम चलता है, और उस पर इसका फेयर ये था कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हमारी बात चल रही थी कि वो कुछ इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज के किसी लोकल इन्वेस्टर को या किसी फॉरेन इन्वेस्टर को जो चीज चाहिए वो एक क्लैरिटी चाहिए। आज डॉलर का रेट सेट नहीं है, हमें नहीं मालूम कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट क्या होगा। मैं कराची में कुछ बिजनेसमैन को बैठा हुआ बात कर रहा था, ये डे बिफोर यस्टरडे की बात है, एंड ऑल वर इंडस्ट्री कैप्टन्स, बट ओवरऑल सेंटिमेंट इज वेरी नेगेटिव। सो माय 3 or 4 points are, we need political stability in this country. अंडर करंट सिनेरियो जिधर हम खड़े हैं इस वक्त, नवंबर 22 है आई थिंक आज 22, और नेक्स्ट 3 to 4 months में आइडियली अगर फरवरी मार्च में we should go for the elections. And again, this is not a political statement. This is what I believe as a professional. I'm also doing business. I'm interacting with whole Pakistan, all the top CEOs, all the top business leaders in this country, all the major foreign investors outside Pakistan. What we need is free and fair elections in this country. Because मेरा एक बहुत फेयर असेसमेंट है, ये मेरी बड़ी क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि टिल अगस्त सितंबर तक हम वेट नहीं कर सकते, ये कंट्री वेट नहीं कर सकती। तो सारे स्टेक होल्डर्स जो इस कंट्री के हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, सबको एक पेज पर होना चाहिए और इस मुल्क के लिए होना चाहिए। पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इस मुल्क के लिए आपको बैठना चाहिए कि फरवरी मार्च में
आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने चाहिए। उसमें फिर जो भी गवर्नमेंट आती है उसको आप एक्सेप्ट करें, 5 साल का टाइम दें। ये जो 3-3 साल में आप गवर्नमेंट को हिला देते हैं ना, ये चीज कभी भी इन्वेस्टमेंट को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जाएगी। और जो एक और पॉइंट है वो ये कि सारी चीजों को एक तरफ रख के जो इकोनॉमी है आपकी, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, उसमें आपको जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को चाहिए, चाहे वो अगेन लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, उसके लिए आपको वो मेजर्स लेने, वो आपको इकदाम करने। पॉलिटिक्स आपकी होती रहेगी, पॉलिटिक्स आपकी चलती रहेगी, लेकिन खुदारा इसके लिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि वी शुड गो फॉर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उसके बाद जब तक ये सिलसिला 5 साल का फिर शुरू नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत तकलीफ से, बट अगेन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 7, 8, 9 मंथ्स आप कोई मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स पे अगर आप देखें तो कोई बहुत काबिल जिक्र कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लोग फेयर में हैं, लोग क्लैरिटी नहीं है, और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, दिस इज एक्चुअली वेरी अलार्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास आज टाइम है, हम बड़ी बात करते हैं कि हमारी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारा बड़ा पोटेंशियल है, हर इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, हर चीज़ में पोटेंशियल है, लेकिन आप यकीन जाने दुनिया जिस स्पीड पे चल रही है, हमारे पास आई थिंक ये कुछ साल हैं। अगर हमने अपना किबला काबा सही नहीं किया, अगर हमने एक सही स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे काम नहीं किया, पाकिस्तान दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर सकेगा। दुनिया में छोटी छोटी कंट्रीज में, उज़्बेकिस्तान गया हुआ था और बड़ी अच्छी हमारी रिलेशनशिप थी उज़्बेकिस्तान के साथ। हमारा उनके प्रेसिडेंट आए थे अपना पूरा डेलीगेशन लेके, फिर उसके बाद एक ऑफिशियल विजिट पे मैं भी गया था। मैं भी कुछ उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ और हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं, मैं भी कुछ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूँ। लेकिन जो एक छोटी सी कंट्री उज़्बेकिस्तान है, अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, उसको स्टडी करें, जो लास्ट 3-4 ईयर्स में वहाँ पे चेंज आया है, जिस डायरेक्शन पे सब वो जा रहे हैं, जिस तरह से वो इन्वेस्टर्स की हैंड होल्डिंग करते हैं, हमें उन खतूत पे चलना होगा। और इसके लिए आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री चाहिए। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं। अदरवाइज लिप सर्विस से आप 6 महीने, 10 महीने, साल गुजार सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। बट हमें अगर आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए देखना है, इस मुल्क का फ्यूचर देखना है, तो हमें इकोनॉमिक रोड मैप के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए एक पेज पर आना होगा और उसमें हमें पॉलिटिक्स को साइड पर रखना होगा। तो दिस इज माई कंक्लूडिंग रिमार्क एंड आई अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस सेमिनार फॉर होस्टिंग दिस एकेडमिक इंटरेक्शन एंड आई होप कि इसकी जो आउटकम आएगी और जो इसकी आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो इस वक्त के डिसीजन मेकर्स हैं वो उसको कंसिडर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much, Aswar. We cannot wait for another 9 months. We need election. Otherwise, the boat will be missed. This is the message from former Board of Investment Chairman, and he's the president of MAP also. So he's very much in touch with businesses locally and internationally. Now we have the last speaker, and then we will have Chairman PTI Imran Khan. I would like to invite Mr. Matthias. He is a long-term foreign investor in Pakistan, and he has been investing in Pakistan for the last 15 years. So he will going to give us the perspective from outside how the international investors are looking Pakistan at the moment. Over to you, Matthias. Thank you, Musamil, and thank you for inviting me here today. I've been investing in emerging markets for 26 years now. I was lucky enough to be among the handful Swedes that introduced Russian equities to the broader public in the mid-90s. I came across Pakistan in 2005, and just like most other foreign investors at the time, I actually did not think it was investable. But I quickly realized it was
a much more developed capital market than many other Asian markets at the time. I traveled to Pakistan the first time in 2008, and I was amazed by the managements I met. Pakistan, in my view, at this time was significantly ahead of Vietnam. So in 2011, I founded Tundra, and we launched the first daily traded Pakistan fund that had been launched for more than a decade. We were lucky with the timing. Between the years 2012 to 2016, our fund was among the top 10 equity funds in Sweden every year. In 2012, for a fact, when foreign portfolio inflows in Pakistan turned positive, it was Swedish retail investors that constituted 2/3 of the net foreign inflow that year. We have a lot to thank Pakistan for. Pakistan allowed us to grow Tundra into a leading frontier markets boutique. Today, we manage one single global strategy where Pakistan is the second largest country weight. And despite all the problems and disasters of recent years, Pakistan is still the top contributor to our global frontier funds performance. And it's been the major reason why we are today the overall highest ranked fund globally in the frontier category. Between the start of 2009 until late October 2014, Pakistan attracted $1.4 billion in foreign portfolio inflows to its equity market. Since late 2014 and until today, the same investors have sold $2.7 billion worth of Pakistan equity. So what happened? First of all, it's important to understand that Pakistan has not been alone in its suffering. Small emerging markets have generally shown a similar pattern. With few exceptions, Indonesia and Vietnam are two of them. All markets have seen outflows as foreign investors have focused on opportunities at home, given the very low rate environment. During the last 8 years of outflows, the MSCI Frontier Markets Index, excluding the GCC countries, is down 18% versus Pakistan's 35% in US dollars. A second reason was, of course, that most small emerging markets took a huge hit when COVID came up on the agenda, given that you have limited room to provide support to your populations. And of course, the final hit, and probably most painful one, was the rise in commodity prices and food prices that have been prevalent since the Ukraine-Russia conflict started. That said, although you have a lot of general reasons for why Pakistan has been in trouble, you also have some specific issues. I feel, as a kind of an outsider who has been watching this country for the last 17 years, sometimes I suspect that the fact that Pakistan was one of the first Asian countries that implemented proper judicial and civil servant structures eventually became its curse. Because the same structures that had been built for your people was improperly used by the wrong people, and mismanagement became chronic. As mismanagement and corruption became prevalent, the young people at the time got the wrong role models, and it was allowed to become a normal routine and actually a necessity to succeed. It has not destroyed the country, but it has slowed down your progress significantly. A country, however, is not defined by its leaders, but by its people. We meet so many amazing people when we travel Pakistan, who run successful and honest businesses, and who really want what is best for Pakistan. A key component when we do research is to assess in what way a potential portfolio company benefits society. The reason is very simple, because after corporate governance risk, state governance risk, meaning the risks of sudden changes in regulations, the taxman knocking on your door, is the biggest risk in our markets. So if we invest in companies that help the local community forward, or if I can put it that way, make the politicians look better than they actually are, this risk is significantly reduced. In Pakistan, we find many great companies, but what we want going forward is for these companies to have breathing room to grow. Being a politician does not have to be very hard. You need to set rules that everyone understands and provide a stable playing field so that the great companies can find their way.
Pakistan have so many talented people who will then do the job for their leaders. In developed countries, the human capital, which is the net present value of all future salaries, makes up approximately 70% of these countries' wealth. And given Pakistan's huge population base and favorable demographic, it makes sense to put a lot of efforts going forward on education in general and technology in particular. If that happens, Tundra will not have a handful of potential investments, but eventually thousands. When I meet locals, unfortunately, I often meet the perception that Pakistan is somehow doomed. It's forever to be an outcast. And yes, the general perception of Pakistan internationally today is poor. But this has been the case since the late 90s. A majority of the world's investors today still believe Pakistan is uninvestable. And you won't be able to change their minds anytime soon. My recommendation here is to hide that frustration that this fact might inflict, and instead focus on the surprisingly many foreign investors that have a much more balanced view of Pakistan than the common narrative in Western media normally presents. They might not be as loud, but they outnumber the critics. And these investors will return post the current crisis, provided that there is a constructive political environment focusing on the way forward. They will appreciate sensible economic policies you implement, but they will also be concerned if there are signs of confrontation. When we invest, we want to spend 80% of our time on the 20% most important parts. If Pakistan reaches $3,000 GDP per capita, you will create additional wealth for your country of $500 billion. I would say that is significantly more than you can ever claw back from historical wrongdoings, and thus, it seems to me, is where you should spend 80% of your time going forward. As politicians, every single constructive measure you implement will take the country one step forward towards a better scenario. So be patient. For someone who launched a fund management company which took a huge bet on Pakistan, you might believe I'm an optimist. In fact, I would say that I'm a very risk-averse and conservative investor. A key strength for me has instead always been about measure opportunities versus current expectations. And expectations on Pakistan at this stage is at an all-time low. What happens during the next 6 months is unknown. But what is sure is that investors expect the worst. So instead of focusing on the negatives in the past, I hope that whichever leadership comes after the election will focus on the way forward. Which path has Pakistan chosen by this time next year? And just to conclude, politicians, you don't have to be flawless. History shows that politicians have plenty of room to make mistakes. If people trust them, they will fill in the gaps for them. And keep in mind the numerous occasions countries have risen from the hardest of crises. My old mentor used to say, every day starts at 100%. And that is the mindset I hope to see from whichever government comes into power after elections. And I think compared to the current situation today, you have absolutely everything to win. Thank you. Thank you very much, Matthias, and thank you for your time. The punchline from Matthias is, next 6 months is unknown, and we have to make sure we should not waste time. My next panelist is none other than Chairman Pakistan PTI, Imran Khan Sahab. Please give him a warm welcome before he addresses. शौकत तरीन, मैं आपको और सारे जो
پینلسٹ ہیں. پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمینار میں اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے, تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی, تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں, میں جو اکانومی کے حالات ہیں, پہلے میں آپ کو سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے. ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا. ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے, چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے. ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے. یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں, جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا, اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم باس سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا تب بڑا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ, UAE اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے. تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی, اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی. تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے, تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے, کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے, جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے, یعنی ملک سے پریشر تھا, لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی, اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے, تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں, اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ. لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا, ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی. تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے, تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا. اینی وے, وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے, اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے. میں نے خود پھر وہ جو IMF کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی, نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی, انسینٹیوز لیے, اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اس نے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا, اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا. اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی, اور جو آخری سال میں 6% تھی. تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے. ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے. اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا, انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے, اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں. ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو
कंट्रोल करे, क्योंकि तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई थी। लेकिन जिन्होंने, जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है, तो मैंने खुद और फिर मैंने शौकत तरीन को भेजा बताने के लिए, न्यूट्रल्स को, कि देखें अगर आप जो वाकई कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहेंगे और इस साजिश में, तो ये कंट्रोल नहीं होगी इकोनॉमी किसी से। ये इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, और वो आगे फ्रेजाइल किस्म का बैलेंस है और सारी दुनिया में इश्यूज हैं। तो ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स जिनको हमारी जगह लाया जा रहा है, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल का है। वो कौन सा गोल्डन एरा था जब इन्होंने कोई इकोनॉमी को बड़ा अच्छा संभाला था? क्योंकि 90s के अंदर डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90s से पहले पाकिस्तान तो सारे सब कॉन्टिनेंट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतर थे। 90s में हम पीछे जाना शुरू हुए जब से ये दो खानदान आए हैं। तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किसी मुल्क को, इकोनॉमी को संभाला था, कि इनको फिर लाया जा रहा था? और वही जो आज हुआ, आज जो हुआ ये होना ही था। और मैंने इससे 5-6 महीने पहले मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। और मेरे ऊपर उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, गद्दार है ये मुल्क का। तो आज अब जिधर हम खड़े हैं, क्वेश्चन तो अब ये है कि इससे निकलना कैसे है। नंबर 1 चीज, जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डायरेक्टली सारी दुनिया के अंदर वो डिमांड करती है सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं होती, बिजनेसेस, हम सब जानते हैं, और आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं इकोनॉमी, यहां बैठे हुए हैं, तो वो जब तक एक इकोनॉमी के अंदर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक माहौल क्या होगा मुल्क का, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस, जो फाइनेंस कम्युनिटी है, वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो CDS पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लायबिलिटीज बीट कर सकती है। अंदर पहली गैलप की सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का, ये गवर्नमेंट का, वो गलत तरफ है, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है, और वो है इलेक्शंस करवाना। और ये अब से नहीं, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हूं कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है, और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा, हमारी पार्टी गेन कर रही है, और वो वाज़ेह है, चाहे बाय इलेक्शंस हो, चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा, यानी ये उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो मेरी नंबर 1 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी, यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए, और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिलता 2018 में, तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता,
کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے, دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے. تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے, رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے. آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے, اس میں اسٹیبلٹی ہے, لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن مائنورٹی میجورٹی, اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا, میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی, اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے. میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں. اکانومی جو ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں, ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, مافیاز ہیں. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے, ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے, کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ, یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے, وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے. اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس, نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے, شوکت ترین نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے. وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے, تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریئل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے. یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں وہ اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو, اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر. اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے. یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹر سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی,
हमने इंसेंटिवाइज किया अपनी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उन्होंने बैंक चैनल से पैसे भेजे तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई। लेकिन इससे बहुत कुछ और हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन यह है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है, अगर हम इनमें से 20 लाख को भी 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। लेकिन उनका, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उन्होंने मुझे शौकत खाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में 30 साल से मेरा इंटरेक्शन है, पीटीआई में जिसको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें फंड किया। आप इनसे पूछें कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में, दुबई में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यही पाकिस्तानी आप देखेंगे मलेशिया भी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक वजह है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे। उनको ये खौफ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और होते हैं, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से। मैं अगर आपको सारा सबब कर दूं एंड में कि देखिए, जो जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं है। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे, कानून की बालादस्ती कायम करनी है, और ये नंबर 1 चीज होगी जो, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो ताकतवर है वो आराम से कानून के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये मुझे सीमेंस का मुझे चेयरमैन मिला उधर डेवोस में, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्यों नहीं सारे इस वक्त सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में होने चाहिए। आपका 22 करोड़ की आपकी आबादी है, लेकिन आप उसको जब आप आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली वो आ जाएगा कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी इन्वेस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनको स्पेशल इंसेंटिवाइज करें। जो भी आगे से अगर कभी, जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश, मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। यानी हम सारा डायरेक्शन अपने मुल्क का वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, बिजनेसेस की रुकावटें जो हम दूर कर रहे थे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, हमने खास तौर पे एंड में मैं मीटिंग्स देता था, उनकी गिलोटीन करते थे, जो डिफरेंट रेगुलेशंस है जो उनको उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा कर देते थे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरा जितना भी ये 3.5 साल में मैंने देखा कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहां। नंबर 1 टूरिज्म, जितना टूरिज्म के अंदर, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली कोविड के 2 साल आ गए जिसमें दुनिया में टूरिज्म इफेक्ट हुई, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं, और हमने एक पूरा प्लान भी किया हुआ है एक स्कर्दू के अंदर एक जगह कि पूरी रिजॉर्ट बने, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह हमारी। ऑस्ट्रिया से मेरे पास टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुड बिकम द नेक्स्ट स्कीइंग सेंटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फें पिघलती है जल्दी यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान की हाइट्स इतनी ज्यादा है। सो टूरिज्म एक है, हर किस्म की रिलीजियस टूरिज्म है, वो सारा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो सारी वर्जन टेरिटरी है, और माउंटेन टूरिज्म। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने कभी जोर नहीं लगाया कनेक्टिविटी का, वो हम एंड में कोशिश कर रहे थे। सारा सेंट्रल एशिया इस वक्त
پاکستان کے لیے اور افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک ایریا وہ بھی ورجن ٹیریٹری ہے, اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے, کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے, یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرئنس پہ ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. تھینک یو.